harmony in society and security of life is what everyone wants. Hello everyone, I am Anya, faculty St. Peter's Law Academy. Welcome you all to our channel. In these lecture series, we will be discussing law of crimes. Law of crimes, as everyone must have heard, I am sure, is a concept which is not alien to you. By which I mean कि आप लोगों ने कहीं ना कहीं ये वर्ड टेलीविज़न, मूवीज़, मैगज़ीन, स्टोरी बुक्स या न्यूज़पेपर में देखा या पढ़ा होगा ज़रूर। हम सब जानते हैं कि क्राइम का मतलब क्या है, तो ऐसा क्या है इस वीडियो में जो हम एक्स्ट्रा जानेंगे। सो व्हाट इज़ स्पेशल इन दिस वीडियो दैट वी विल लर्न मोर एंड एक्स्ट्रा। सो इस वीडियो में वी विल अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ क्राइम, what is the need for a criminal law, what is the meaning of law of crimes, what are the types of crimes, what are the different types of major laws in India that govern the criminal machinery in our country. So basically our lecture series on law of crimes will be divided into 4 parts, starting with the meaning of law of crimes. जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि क्रिमिनल लॉ या क्राइम आप सब अनकॉन्शियसली या कॉन्शियसली कुछ ना कुछ समझते ही होंगे। ऐसा कोई नहीं है जो वीडियो देख रहा हो और उसको क्राइम का मतलब, उसको गुनाह का मतलब कहीं ना कहीं पता नहीं होगा। लेकिन इस वीडियो में हम आपके लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशंस 5 ईयर या 3 ईयर LLB एंट्रेंस एग्जामिनेशन जैसे क्लैट, AILT एंड दिल्ली यूनिवर्सिटी लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बारे में हम उस तरीके से इस सब्जेक्ट को, उस तरीके से लॉ ऑफ क्राइम्स को पढ़ेंगे जो आपके एग्ज़ाम में आपको क्लियर करने में एग्ज़ाम आपकी बहुत बहुत हेल्प करेंगे। सो वी विल बी डिस्कसिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ क्रिमिनल लॉ with a focus to help you guys, guide you people to crack your entrance examination with flying colors. First of all, I would like to congratulate you all for choosing law as a career option, because these days law is the most sought after career along with other career options, as you all know. So we will be discussing criminal law in detail. So let's start with the concept of crime. So as you can see on the board on the slide, that first topic of the video is law of crimes. So crime का मतलब basically क्या होता है? Crime का मतलब होता है कोई ऐसा act या ऐसा omission जो punishable हो। Act is a positive way to tell something that you have done something. Act मतलब आपने कुछ किया है और वो punishable है law से। तो law ने किसी act को punishable बनाया है, उसको punishment उसको दी है, तो वो क्या हो गया? क्राइम हो गया। और एक्ट की डेफिनेशन के अंदर ओमिशन भी इंक्लूड होता है। नाउ ओमिशन वर्ड हैज़ कम फ्रॉम द वर्ड ओमिट। ओमिट का मतलब होता है आपकी ड्यूटी थी करना एंड यू हैव एस्केप्ड फ्रॉम इट, आपने वो परफॉर्म नहीं किया। तो आपको जो करना था आपने परफॉर्म नहीं किया, तो भी वो आपकी ओमिशन जो आपने नहीं किया वो भी पनिशेबल बाय लॉ होती है। सो बेसिकली इट इज़ एन एक्शन विच इज़ अनएक्सेप्टेबल बाय लॉ. What is law? Law is basically a set of rules made by the ruler or the government. By saying it is a set of rules made by the ruler, I mean someone who is in authority. Ruler word इसलिए यूज़ किया जा रहा है क्योंकि पहले ज़माने में in the earlier times they were kings of different kingdoms and they had their own separate laws. Slowly and gradually with the unification of our country and the system of criminal law getting advanced, we had the system of government and everything. ठीक है, सो जो गवर्नमेंट लॉ बनाती है, आपका पार्लियामेंट लॉ बनाता है, उस लॉ के तहत कोई भी एक्शन जो है अनएक्सेप्टेबल है, पनिशेबल है, इलीगल है, अगेंस्ट द लॉ है, उसको हम लॉ ऑफ क्राइम्स के अंदर क्राइम की डेफिनेशन बोलते हैं, उसको हम क्राइम का नाम दे देते हैं। अब क्राइम एक्ट भी हो सकता है, ओमिशन भी हो सकता है, इसको डिटेल में हम समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपने किसी का मर्डर किया या आपने किसी ऑब्जेक्ट को चोरी किया, यू हैव कमिटेड थेफ्ट, सो यू हैव डन समथिंग हेयर, दिस इज़ अ पॉजिटिव एक्शन, ऑल्दो दिस इज़ नॉट अ पॉजिटिव थिंग टू डू, बट इट इज़ एन एक्शन विच हैज़ बीन डन, कुछ हुआ है यहाँ पे, सो दिस इज़ एन एक्शन विच इज़ पनिशेबल बाय लॉ. So this example comes in the ambit of an act. Now what is an omission? I will explain you further. What is an omission?
ओमिशन मीन्स आपकी ड्यूटी थी। फॉर एग्जाम्पल एक पुलिस ऑफिसर है, उनकी ड्यूटी है कि एक अच्छे से रिकॉर्ड मेंटेन करना, एक ट्रू रिकॉर्ड मेंटेन करना, फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस का जो उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया है उसका एक रिकॉर्ड मेंटेन करना। वो रिकॉर्ड के अंदर कुछ गफला करते हैं, इनकरेक्ट फॉल्स पर्टिकुलर्स इंक्लूड करते हैं इन्वेस्टिगेशन को डिरेल करने के लिए। सो दिस इज़ समथिंग दैट दे आर नॉट डूइंग। उनको कुछ फैक्ट स्टेट करने थे, उनको कुछ मेंटेन करना था रिकॉर्ड, एंड ही हैज़ नॉट डन एनीथिंग दैट थिंग, ही हैज़ omitted to do that thing. So this word, this meaning comes in the definition of omission. So I hope I have made myself very clear that what is crime. Crime is an act or crime is an omission which is punishable by law. So meaning of criminal law is, as you can all see here, is criminal law is an instrument of social control. Social control का मतलब ये हुआ that it is an instrument, it is a means, it is a way to have a control in the society, to have a discipline in the society. Now basically, as we all understand that crime is very difficult to define. Crime is very difficult to define because the meaning of crime changes from time to time, from age to age, from society to society. What may be crime today is not a crime, was not a crime few years back. What may be crime today will not be a crime after some years. For example, section 377 of the IPC is decriminalized recently. So at one point of time that was something that was punishable. Some crimes are decriminalized later on. So this means that crime, the definition changes, the meaning changes, because law is a dynamic concept. So law of crimes is a very dynamic and an interesting subject for entrance examinations, and for those who will become practicing lawyers or who will opt for judiciary in future, this subject is very important. It interests litigating lawyers and it is a very important subject for all your competitive exams of the higher level. So it will be good that you have your basics clear from the very beginning. So now it is a rule which is made by the ruler to govern the population. पॉपुलेशन को गवर्न करने के लिए जो रूलर, जो गवर्नमेंट ने लॉ बनाया है, उसके तहत अगर कोई एक्ट पनिशेबल है, इलीगल है, अनएक्सेप्टेबल है, तो वो क्राइम की डेफिनेशन में आ जाता है. सो व्हाट इज़ द क्रिमिनल लॉ? क्रिमिनल लॉ क्या होता है? इट डिफाइंस, इट गिव्स यू द डेफिनेशन ऑफ दोज एक्ट्स दैट आर पनिशेबल अंडर लॉ. Defines and punishes acts or omissions that are perceived as offences. Those acts which are seen as offences are defined under criminal law. Any act punishable by law is a crime. Not every act can be punishable by law. Only those actions, those omissions that are punishable by law are crime. Now, criminal law is different from morality. Principles of morals, सिद्धांत जिनको हम बोलते हैं हिंदी में, those are different from our criminal law. This we will discuss in another video later on, that how criminal law is different from morality. Now I'll give you a very small example, that you are a professional swimmer, all right, and you go on a vacation and in a resort where there is a pool, and you see a kid who is drowning in the pool water, something like that. But you are there, you are busy enjoying with your friends, and by somehow the kid drowns and he does not die, but he has some breathing problem or something. Now you are standing there with your friends, you did not focus on the child, even when then you had the training to protect anyone and you are a professional swimmer. So people might say that it was your moral duty to protect their child, since you know how to swim and you were present at the spot. So but law will not punish you for that, because it was your moral duty, it was something which out of morals you could have done. So moral acts, moral wrongs are not covered under crime. The basic reason why morals are not covered or morality is different from criminal law is that basically what is moral for one person might not be morality for the other person. आपके लिए क्या चीज़ जो है मोरालिटी के अंडर आती है और किसी और के लिए क्या चीज़ मोरालिटी के अंडर आती है, वो बहुत एक सब्जेक्टिव सा, बहुत एक डिफरेंट सा ओपिनियन हो सकता है, उसको हम डिफाइन भी नहीं कर सकते, और इसलिए क्रिमिनल लॉ इज़ डिफरेंट फ्रॉम मोरालिटी.
So any act punishable by law is a crime, one thing. Act includes omission, which I have explained you that what is the meaning of omission by the example of the police officer. And criminal law basically defines and punishes acts and omissions. Now criminal law is very wide in our country, we'll just see, alright, how. So it also defines the acts which are crimes. It also tells us the procedure, पूरी प्रक्रिया भी हमको बताता है क्रिमिनल लॉ, ये बताने की कि किसी एक्ट को क्राइम कब बोला जाता है, कैसे बोला जाता है और उनका ट्रायल का प्रोसीजर क्या है और फर्दर पूरा प्रोसीजर क्या रहता है, कन्विक्शन और एक्विटल तक का, जजमेंट आने तक का पूरा क्रिमिनल लॉ की मशीनरी कैसे वर्क करती है अलग अलग स्टेजेस पे, वो आपका प्रोसीजरल पोर्शन में आता है क्रिमिनल लॉ के. सो आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ वेरी क्लियर व्हाट इज क्राइम, what all comes in crime, procedure comes in crime, the definition comes in crime, crime is different from morality and things like that. So what is the element of crime, what are the elements of crime? Now elements of crime comes in the meaning of crime. So first word which is written on this slide is actus rea and the second word is mens rea. So actus rea means the action, the active part of the criminal, active part of the crime. So actus rea word is a Latin word and it means the physical act, and mens rea means the mental element of crime. Now this is a very important point for you all to understand that elements of crime are two, actus rea and mens rea. Actus rea is the physical act, mens rea is the guilty mind or the mental element. Now for any act to be called as a crime, both actus rea and mens rea should be present together, alright. So this thing is conveyed by a Latin maxim which is written here on the slide, which says actus non facit reum nisi mens sit rea. Presence of both is essential to constitute a crime. There cannot be a crime without a guilty mind. The basic meaning of this maxim is very important, and this maxim is very important, so you guys can note it down, alright. So actus non facit reum nisi mens sit rea. So presence of both is essential to constitute a crime. अगर एक भी चीज़ absent होगी तो उसको हम crime नहीं बोल सकते. So this means that actus rea plus mens rea, alright. So actus rea plus mens rea gives us the crime. So एक भी चीज़ अगर absent होगी तो उसको crime नहीं बोलेंगे हम, ठीक है. So actus rea से मैं इसका example देती हूँ कि a hardened criminal has purchased a knife to murder somebody. So to purchase a knife, till this his mental intention comes into picture कि उसके mind में ये चल रहा है, उसकी mental intention, उसका mind guilty है that he has purchased a knife to kill someone. This is the mental intention उसकी दिख रही है इससे. Now if he kills the person with that knife, his actus rea will be evident. उसका physical act जो है वो evident हो जाएगा और इसके साथ ही जो है this action of his of killing that person will be called a crime. अगर एक भी चीज़ absent होगी तो वो crime नहीं होगा. For example, उसने पहले सोचा that he'll kill someone, alright, but that is only his mental intention. But after that he changes his mind. He does not give it the conclusion of an act. वो act तक उसको लेकर नहीं जाता, वो अपना mind बदल लेता. He understands that this is a crime, he should not commit it. तो वो actus rea यहाँ पर absent है. तो एक्टस रिया एब्सेंट है, लेकिन मेंस रिया तो था. स्टार्टिंग इंटेंशन, उसका मोटिव, उसका मेंटल एलिमेंट तो बिल्कुल था वहाँ पर कि मुझे नाइफ लेना है, क्यों लेना है, किसी को किल करने के लिए, किसी को मारने के लिए. सो विदाउट द एक्टस रिया the guilty mind will not constitute a crime. That intention will only be called as an intention. So in this first lecture I have made myself clear, I hope, that what is a crime, meaning of crime and elements of crime. Hope to see you in other lectures and stay tuned to our channel for more information. Alright, thank you so much. Have a good day. Bye.